Very good evening, guys. Welcome to the yet another form filling video of Pratham Test Prep. My name is Nikhil Chabra. This video we are shooting to help you in filling up the form for BML Munjal University application form 2022. Guys, BML Munjal University is a part of Hero Group. आप सबने Hero Group का नाम सुना होगा. This university belongs to that group, and it's situated in Gurgaon region. Guys, we have a lot of students in Delhi NCR जो कि चाहते हैं कि हम Delhi NCR में ही पढ़ें, हम Delhi NCR से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, and we want to get into some good universities. बहुत सारे students हैं जो कि हैं बहुत सारे फॉर्म फिल नहीं करते हैं दिल्ली के बाहर के, जस्ट बिकॉज उनको दिल्ली में स्टे करना है, दिल्ली NCR में स्टे करना है. सो वो लोग चाहते हैं कुछ ब्रांड्स मिल जाए उनको, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी मिल जाए, ब्रांडेड यूनिवर्सिटी मिल जाए जिसमें वो अप्लाई करके एक अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज में जा सकें. सो BML मुंजाल was वन ऑफ द गुड कॉलेजेस इन दिल्ली NCR रीजन. तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा गाइस, आप इस फॉर्म को भी फिल कीजिए. अगर आप दिल्ली NCR कुछ अप्लाई करें तो ऑफ कोर्स ये आप ऑप्शन बना के चलिए अपने साथ. ऑलराइट, सो व्हाट विल गोना डू इन दिस वीडियो, विल टॉक अबाउट BML मुंजाल यूनिवर्सिटी. उसको एप्लीकेशन कैसे फिल करते हैं, उसको किस तरीके से प्रोसेस करते हैं, कितना अमाउंट है, कितना फीस स्ट्रक्चर है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. ऑलराइट, सो बिफोर आई टेक यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप द फॉर्म, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू हाईलाइट. BML मुंजाल का जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसके अंदर आपका जो पेमेंट वाला पार्ट आता है दैट कम्स इन बिटवीन, and once you make the payment the form is not done. Okay, once you make the payment, after that you will have to continue and it will take you to another window where you will have to punch in the other information. Alright, so that means please जब भी आप पेमेंट कर दे, doesn't think that your form is done. आपको उसके बाद नेक्स्ट करके बाकी इन्फॉर्मेशन भी फिल करनी है. कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि BML मुंजाल में सिर्फ पेमेंट करने के बाद छोड़ रहे हैं. नो, दिस इज़ नॉट द वे. आपको नेक्स्ट विंडो पे जाना है एंड आप उसको कर दीजिए. जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पे कर दिया है, यू कैन लॉग इन विद योर क्रेडेंशियल्स, यूजर नेम पासवर्ड आपके पास होगा. आप उसको लॉग इन करके आप उसका पेमेंट के बाद नेक्स्ट विंडो ऑटोमेटिकली दिख जाएगा एंड उसके बाद आप उस इन्फॉर्मेशन को फिल कर सकते हैं. ऑलराइट, सो let's talk about the BML Munjal option. So no, commonly common courses offered in BML Munjal is BBA, BCom Honors, BA Economics Honors, BBA, MBA Integrated, which is a 5 years integrated program. Class 12th में eligibility criteria है. Class 12th में आपके minimum 60% होने चाहिए. That is easy to get. आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, दैट इज़ द पर्सनल इंटरव्यू. आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा एंड अगर आप BML मुंजाल को अगर आप लॉ कोर्सेज के लिए करते हैं तो लॉ कोर्सेज के लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा एंड इंटरव्यू भी होगा. अगर आप लाइक को BBA, BCom ऑनर्स, इकॉन्स करते हैं तो दैट विल बी थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग, द इंटरव्यू प्रोसेस. अगर आप लॉ के लिए अप्लाई करते हैं, यू विल बी हैविंग द एंट्रेंस एग्जाम एंड द इंटरव्यू प्रोसेस टू. Alright, so online application was started on 13th April 2022. Last date of the application is 5th May 2022. Exam date is not required because अभी तो majority of the time they're taking the interview. इंटरव्यू के बेसिस पर हो रहा है. अगर LLB का एग्जाम डेट आएगी फॉर लॉ प्रोग्राम्स, वी विल बी नोटिफाइंग यू फॉर दैट एज वेल. ऑलराइट, द फॉर्म लिंक इज www.ug.pmu.edu.in. This is the website we have. You can directly go to the website और प्रथम के अकाउंट में डायरेक्ट लिंक हमने दिया हुआ है. Once you click on that link, you will be able to get to the page. बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि गलत से फॉर्म फिल कर देते हैं. सो आई वुड रिकमेंड प्रथम के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली आप प्रथम अकाउंट में जाइए, प्लीज़ फॉर्म्स अपडेट पे क्लिक करके आप फॉर्म लिंक वहीं से क्लिक कीजिए सो दैट यू डोंट गो टू द रॉन्ग फॉर्म. ओके, सो एप्लीकेशन फीस इज़ 1500 रुपीज़ पर फॉर्म. अगर आप 2 फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 15 रुपीज़ इंटू 2 आपको 2 फॉर्म के लिए पे करना होगा. सो आई विल क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक एंड इट विल टेक मी टू द मेन रजिस्ट्रेशन पेज. ऑलराइट, so this is the main registration page. On the right hand side, I will have to punch in the basic information. I will have to punch the name and the last name. I will have to choose the course which I want to go for. So supposingly मेरे को law पसंद है, अगर मैं law course करना चाहता हूँ, I will choose law here. LLB option I'll get it here. I will have to punch in the mobile number, my email ID, and I will have to keep the password. So again, password is very important guys. नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशंस में जो पासवर्ड होता है, आपका एक स्पेशल कैरेक्टर चाहिए होता है, आपको एक अल्फ़ाबेट चाहिए होता है, आपको नंबर चाहिए होता है, आपको अपर केस और लोअर केस वो भी चाहिए होता है. सो ईजिएस्ट वे टू क्रिएट द पासवर्ड इज कीप योर नेम @123. सपोजिंगली माय नेम इज निखिल, आई विल कीप N capital, S small @123. That is the easiest way to keep that password and easy to remember too. So again, that is not the compulsion. आपका जो पासवर्ड आपको बनाना है बनाइए, बट
this can be a option for you. Okay, so password create करने के बाद you will click on get OTP. Once I do it, I will get this particular page. I will have to punch in the OTP which I will get on the mobile number, and I will click on submit. Once I do it, I will get the username and password in my mobile number and the email ID. I will punch the username on the left hand side, and I will have to punch in the password which I created. Once I do it, I will click on login. After logging, I'll click on start application. Once I click on start application, it will give me this particular page. Okay, so email ID is already I have mentioned. The application number it will give me. Please jot this application number somewhere because it's very important. And उसके नीचे अब मैंने course already select कर लिया. Supposingly I was saying for law, I am choosing BBA here. So I will click on save and continue. Once I click on save and continue, this information I've already filled. My mobile number, email ID was already mentioned. I will mention the date of birth on the right hand side. I will mention the gender. I will have to upload the passport size photograph here. Alright, आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो आप उसको अटैच कीजिए. अगर आपको कंप्रेस करने में कोई प्रॉब्लम होती है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि फ़ोटोग्राफ क्लिक करते हैं अपने फ़ोन से. साइज़ हो सकता है फोटोग्राफ का 3 MB 4 MB. सो अगर आप कंप्रेस करना चाहते हैं, गो टू गूगल, जस्ट टाइप कंप्रेस इमेज. You will find a lot of software online using which you can just compress the image and you can attach it. All right. Below that you will have to punch in the nationality, category, first language you have. You can put English or Hindi depending upon your choice. Haryana domicile hai, yes or no. You can punch in that information. Below that you will have to punch in your current address. So current address में आपको country, state, city, pin code number and proper address ये आपको पूरा का पूरा mention करना होगा. Alright, so if you go below, you need to punch in this information. This is for your parents. Okay, so you need to mention your father name, relationship with your with the applicant. So supposingly I'm putting your information for your mother or father, you have to mention the relationship here. You have to punch in their email ID, not your email ID, their email ID or the guardian's email ID, their mobile number. Again, you can call it as an alternate phone number, nationality, हाई लेवल ऑफ एजुकेशन, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो भी है आपको वो मेंशन करना है. देयर ऑफिस एड्रेस, occupation or the profession, their designation in the company, again the name, relationship with the applicant and the email ID. So this can be different and this can be same also. Supposingly मैं ऊपर father information punching करके मैं mother information नीचे डाल सकता हूँ and vice versa भी कर सकता हूँ. So depending upon your thing, your choice, you can do it. Once I do it, I will click on save and continue. So once I do it, the save and continue option, I will get this particular payment thing. I will the fees is 1500 rupees. I will click on save and continue. Once I do it, this particular payment options are available. Cards, banks, GPay options are available. I can choose a desired payment mode and I can make the payment for BML Munjal. Again, to highlight, it is very important. After making the payment, I will not stop. It will take me to another page where I will have to fill in other important information. Okay, so I will make the payment and it will give me this particular page next. So I will have to punch in the information for my 10th. I will have to mention the school, the board, score, the percentage, the score I have got it, and the aggregate percentage here on the lower side. ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड, दिस इज फॉर 10th स्टैंडर्ड. सो अगर आप अभी 12th में है तो आप ईयर ऑफ, अगर और गैप ईयर नहीं है इन बिटवीन, दैट विल बी 2020. ओके, उसके नीचे यू विल हैव टू अटैच द 10th मार्कशीट. ओके, आपको 10th की मार्कशीट अटैच करनी है, आप उसको अटैच कीजिए एंड उसके बाद यू हैव टू पंच इन द इंफॉर्मेशन फॉर 12th एज वेल. सो स्कूल नेम, बोर्ड नेम, स्ट्रीम नेम, यू विल हैव टू मेंशन द स्ट्रीम नेम. उसके अलावा आपको ईयर ऑफ पासिंग लिखना है. सो अगर आप 2022 में अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ईयर ऑफ कंप्लीशन विल बी 2022. अगर आप पास आउट ऑलरेडी हो चुके हैं, आप लास्ट ईयर ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, तो आप उसको 12th के मार्क्स भी आपको यहाँ पर पंचन करने होंगे. अगर आप इस साल अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, देन यू विल पुट रिजल्ट स्टेटस में अवेटेड. ऑलराइट, आई होप दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Let's just move ahead and fill in other information. So it is asking for other entrance tests which you are planning. So supposingly I'm also applying for CLAT. So I have clicked यहाँ पर CLAT information. I can mention the roll number here, year of passing, percentile. So this information is not mandatory. See, the year of passing is here, the test name is here. Roll number and percentile is not mentioned because a lot of universities have
not kept their entrance exam till now, so बहुत सारे के रिजल्ट नहीं आए हैं, so you can keep that blank. ऑलराइट, तो यहाँ पर भी आप इसको ब्लैंक कर सकते हैं। अगर आपके पास एडमिट कार्ड आ चुका है 12th का, तो आप यहाँ पर पंचिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं आया, यू कैन कीप दैट ब्लैंक। ओके, उसके नीचे भी ऑप्शन है, डिड यू अपीयर फॉर इन एनी अदर एंट्रेंस टेस्ट, येस और नो, यू कैन मेंशन आई एम कीपिंग नो, माय चॉइस। अगेन, डिड यू अपीयर इन एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम, आप उसमें भी येस और नो करके आप उस पर आगे बढ़ सकते हैं। सो आई हैव केप्ट नो देयर, आई विल क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू, and this particular page I will get it. So on the left hand side, top left, I will get blood group. I if I'm having some, if I'm from PWD category, I can mention yes there, but I will have to make sure अगर मैं PWD category mention कर रहा हूँ तो मेरे को वहाँ पर उसके लिए अलग से सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। Okay, so I'll keep no there. Any health issues, yes or no. Any additional information if you want to provide, you can mention yes or no. अगर आप उसको yes कर देंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा पंचिंग करने का। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने जो भी किया है आप उसको मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास कुछ मेरिट है ऑन द राइट हैंड साइड, यू कैन मेंशन इट। आपने कौन से पीरियड में उसको किया था वो चीज़ मेंशन कीजिए। लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन क्या था, दैट मीन्स इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन था, नेशनल था, स्टेट था, कौन से लेवल का था, आपको वो चीज़ मेंशन करनी है। इफ़ यू हैव द सर्टिफिकेट, प्लीज़ अटैच दैट सर्टिफिकेट अलॉन्ग, ठीक है। बिकॉज जहाँ पर भी इंटरव्यूज़ होते हैं, इंटरव्यूज़ के टाइम पर आपका प्रोफाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है गाइस। सो आपके पास जो जो सर्टिफिकेट्स हैं इंपॉर्टेंट, आप उसको मेंशन कीजिए, अटैच कीजिए एंड क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। वंस आई क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, मेरे पास 10th और 12th की इन्फॉर्मेशन जो मैंने फिल इन किया है वो आ जाएगा। आई विल क्लिक ऑन सेव and that's it. Once I do the save part, my work is done, my form is done. I don't have to do anything else after clicking on save. So my work is done. उसके अलावा आपको अपना यूज़र नेम पासवर्ड को संभाल के रखना है, बिकॉज वेन एवर यू गिव द इंटरव्यू एनीथिंग हैपन्स, यू हैव द यूज़र नेम पासवर्ड समवेयर। फॉर प्रथम स्टूडेंट्स, हमने यूज़र नेम पासवर्ड के लिए ऑलरेडी एक फॉर्म्स अपडेट का ऑप्शन बना दिया, फॉर्म्स वॉलेट का ऑप्शन बना दिया, जिसमें जाके अपने सारे स्टूडेंट्स अपने सारे यूज़र नेम पासवर्ड को सेव रख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी फिल अप द फॉर्म फॉर BML मुंजाल एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है फॉर्म फिलिंग के टाइम पर, आप हमारे पास कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विल श्योरली हेल्प यू इन फिलिंग अप द फॉर्म। ऑलराइट guys, will be creating more videos for the upcoming forms. अभी सेंट जेवियर्स का फॉर्म आना बाकी है, अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी बाकी हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी, सो उनके भी हम एप्लीकेशन फॉर्म्स के वीडियोस क्रिएट करेंगे। प्लीज़ शेयर दिस वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, जिन्होंने कोई फॉर्म नहीं फिल किया है, एटलीस्ट इस फॉर्म वीडियोस को देखकर वो ठीक से फॉर्म्स को फिल कर पाएंगे। Alright, so let's catch you in the next video. Till that time, take care. Work hard for your board examination, work hard for your entrance test, and very important guys, stay safe. Thank you. Have a nice day, people.